हमने लास्ट क्लास में देखा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव. What we have seen was directional derivatives of a multivariable function at a point in some direction. Okay. हमने क्या ऑब्जर्व किया? We observed क्या ऑब्जर्व किया था? हमने पाया था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स एप्रोप्रिएट एक्सटेंशन नहीं है डेरिवेटिव का. डायरेक्शनल डेरिवेटिव is not an appropriate extension of the notion of derivative differentiation. Okay. और ऐसा क्यों? Because हमने देखा एक एग्जांपल जिसमें सभी डायरेक्शंस में एक फंक्शन के सभी डायरेक्शंस में आप डेरिवेटिव्स प्राप्त कर सकते हैं. मींस डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था किसी एक पॉइंट पर. ओके. So this means directional derivative is not the thing that we are seeking. Correct? जब हमें यह मालूम पड़ा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव वह नहीं है जिसे हम चाहते हैं, तो हमने फिर से डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन जो कि वन वेरिएबल के केस में थी आपने पढ़ी है, उस पर फिर हम गए और हमने कुछ और एनालिसिस किया. ठीक है. और जो एनालिसिस किया उससे मैं बहुत संक्षेप में आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा. मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन f डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट a पर, ओके, तो इसका मीनिंग है कि हम इस फंक्शन f को किसी एक लीनियर फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करेंगे. ओके. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि हम एक लीनियर फंक्शन, एक्चुअली नॉट लीनियर बट हाँ, इसको हम अफाइन लीनियर फंक्शन कहते हैं. जो इस केस में एक टेंजेंट लाइन है पॉइंट a, f a पर, और ये क्या काम कर रहा था? याद करिए, ये काम कर रहा था कि अगर यह x पॉइंट a पॉइंट की ओर जाता है तो यह गैप f, यह नॉन लीनियर और लीनियर गैप. ओके. ये नॉन लीनियर डिफरेंस है, ये लीनियर डिफरेंस है. करेक्ट. ओके, लेट मी शो color where are, okay. So this change is non-linear change. यहाँ पर जो फंक्शन के ग्राफ में जो चेंज हो रहा है वह नॉन लीनियर चेंज है, जबकि इस लाइन में जो चेंज हो रहा है वह लीनियर चेंज है. ठीक है. तो हमने देखा था कि नॉन लीनियर चेंज और लीनियर चेंज के बीच का जो डिफरेंस है वह इस हॉरिजॉन्टल चेंज से तेज जीरो की ओर भागेगा. ओके. इसका मतलब दिस गैप between the graph of f and the tangent line. Okay, this gap goes to zero faster than x minus a goes to zero, or you can say x goes to a. करेक्ट. ये मीनिंग था. ठीक है. इसे दूसरे शब्दों में हम कहते हैं व्हाट वी से इज, हम कहते हैं कि यह जो टेंजेंट लाइन है, दिस इज बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन f एट पॉइंट a. क्या कहते हैं? लेट मी राइट.
हम जो कहते हैं दिस टेंजेंट लाइन, द टेंजेंट लाइन एट ए इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है अभी बताते हैं। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ नियर ए। सो इसका मीनिंग क्या है, ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन का मीनिंग क्या है? लेट मी शो यू कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ओके इसका मतलब है कि हम f को एक लीनियर और अफाइन लीनियर फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं। मीनिंग सो सपोज we search for an affine linear function। ओके अभी affine linear function क्या होता है इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। affine linear function these are translations of linear transformation। these are translations of linear transformation। अब आप जानते हैं कि रियल लाइन फ्रॉम R टू R लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखते हैं? ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम R टू R इज ऑफ द फॉर्म Tx is a dot x for some a in R, this a is fixed, okay, and this is true for all x in R, correct? तो affine linear function क्या हुआ? So affine linear function means say let me call this affine linear function alpha. So alpha x is given by some ax plus b, okay? But you say we are searching an affine linear function alpha to approximate f near a, okay? अब हमें एक फंक्शन जो कि अफाइन लीनियर फंक्शन है एक एक नियर चाहिए, ओके? नियर ए हमें चाहिए, तो इसका मतलब वह ए से पास करना चाहिए, ओके? वह ए से पास करना चाहिए। तो इस फंक्शन की मदद से मैं आपको एक फंक्शन, ओके यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा बिकॉज दिस ए एंड दिस ए दीज आर, एक काम करते हैं, मैं इस ये जो अल्फा के साथ ए लिखा है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, उसको मैं सी नाम देता हूँ। तो लेट मी कॉल दिस सी डॉट एक्स, दिस इज ऑल्सो सी। अल्फा इस फॉर्म का दिखेगा क्योंकि यह पॉइंट ए से ए कॉमा एफ से पास हो रहा है। तो ये किस तरह का फंक्शन होगा? अल्फा एक्स को मैं लिख सकता हूँ अल्फा एक्स, टेक अल्फा एक्स इक्वल टू सी एक्स माइनस ए प्लस बी, ओके? और यहां पर हमने वर्ड दिया कि यह अप्रोक्सीमेट करे। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स लिमिट of fx minus alpha x as x goes to a is 0, ओके? जब ऐसा होगा, जब यह कंडीशन होगी, इसका मतलब क्या है? fx माइनस सी एक्स माइनस ए प्लस बी लिमिट x goes to a is 0, okay? So what does this mean? This means this b को क्या होना पड़ेगा? दिस मीन्स वी गेट क्या मिलेगा हमें? b इक्वल टू एफ ए, ओके? So this b must be fa. Now if we take b equal to fa and c equal to f dash a, then what we get? Then we get limit
x goes to a, fx minus alpha x divided by x minus a, this thing goes to 0. Okay, correct? So this means this fx minus alpha x goes to 0 faster than x goes to a, or in other words x minus a goes to 0. ठीक है, ये बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, बिकॉज यू सी जैसे x a को जाएगा मीन्स ये वाला पार्ट 0 को गया डिनोमिनेटर, सिमिलर बिकॉज दिस लिमिट इज 0, तो आप जानते हैं यह डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वह तेजी के साथ 0 को जाएगा कंपेयर टू x माइनस a. ओके, so this fx minus alpha x, this fx minus alpha x is gap between the graph of f and the line alpha x. Okay, the line or the graph of alpha x. Okay, or what is x minus a? X minus a is the horizontal. This x minus a, this is horizontal displacement. horizontal displacement. तो आपने पाया कि गैप ग्राफ ऑफ एफ और लाइन अल्फा एक्स के बीच का गैप ज्यादा तेजी के साथ 0 को जाता है रादर देन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के. ओके, अगर आप देखें अल्फा एक्स की जो वैल्यू हम b इक्वल टू एफ ए और c इक्वल टू एफ डैश ए रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा एक्स, व्हाट वी हैव, अल्फा एक्स वाज दिस, अल्फा एक्स वाज c x माइनस a प्लस b. ओके, और मैंने आपको बताया था कि b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? एफ ए. So this is f dash a x minus a plus f a. You see this this equation is nothing but this is equation of tangent. Equation of tangent line passing through a comma f a. ओके, ये टेंजेंट है a comma f a पॉइंट पर. ग्राफ f पर एक टेंजेंट बनाता है किस पॉइंट पर? a comma f a. करेक्ट. सो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टेंजेंट लाइन इज बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द ग्राफ f. ओके, और इसे हमने कुछ खास तरह से लिखा था. वह खास तरह क्या था, मैं उसको दोबारा से बोलना चाहूंगा. सो हमने क्या बताया था आपको? मैंने आपको बोला था लिमिट एफ एक्स माइनस अल्फा एक्स upon x minus a, x goes to a, this is 0. This implies fx minus alpha x. अभी हम जानते हैं alpha x क्या है, उसे हम लिखेंगे. alpha x is o x minus a. Okay, this implies fx minus fa plus f dash a x minus a. This is a little o of x minus a. अब यहां पर आप मान लीजिए क्योंकि x a के बहुत करीब है, सो लेट मी राइट x इक्वल टू a प्लस h. ओके, वेयर h इज सो स्मॉल, h इज स्मॉल
enough that A plus H lies in the domain of F. Okay. So what we get? We get FA plus H minus FA minus F dash A dot H equal to OH. Correct? Or this is same as FA plus H is FA plus F dash A H plus OH. और याद करिए OH का मीनिंग था so little OH. So here notation. So this little OH this is called Landau's little OH notation. Those little OH notation. Okay, what does this mean? So suppose I have a function g equal to OH edge h goes to say 0. This means limit h goes to 0, g by h equal to 0. Okay, so what are examples? So if I take h square, okay, gh equal to h square. If gh equal to h square, then h square is OH. You see, because limit h goes to 0, h square by h is 0. But h is not equal to OH. Why? Since limit h by h goes to 0 is non-zero, it is 1. Okay, therefore h is not of order h. We can say h is not of order h. Okay, OH, little OH. So we let me write whatever we have seen so far. Let me write that. So from the above discussion, we get the following. So what we get? हमारे पास क्या है? हमारे पास एक फंक्शन है किसी ओपन सेट ऑफ R टू R. ओके, कोई ओपन सेट A ले लेते हैं R में, और वहां पर एक फंक्शन डिफाइंड है f, और जो कि रियल वैल्यू ले रहा है. Let me take a point A in A, then f is differentiable, f is seeable at A if what we get, if f A plus h equal to f A plus f dash A h plus OH. Okay. Correct. So this is what we have observed so far. And you see this this h is, we are taking those h. So this is, let me write it here, h tending to 0.
Now let me bring your attention here at this expression f dash ah. Okay, and we go back to your linear algebra course. हम फिर से कहाँ जाते हैं, लीनियर अलजेब्रा में जाते हैं और देखते हैं क्या यह है। ध्यान से देखिए, एफ डैश ए इज ए रियल नंबर, एफ डैश ए दिस इज ए रियल नंबर. Okay, and if we consider this function, we consider the function t from R to R, okay, defined by th equal to f dash h, f dash into h, okay, f dash into h. So in this case, this t is a linear transformation, this t is linear function, okay, linear transformation or linear function on R, correct? Similarly, if we have, or let me say conversely, if we take a real number say k, okay, k is a real number, then we can define a linear transformation. We can define a linear transformation. How do we define linear transformation? For this k, given this k, we define t from R to R given by t x equal to kx. Kx means k into x, okay, for all x in R. This is again a linear transformation. So given a real number, you get a linear transformation, and given a linear transformation, you get a real number. So this means there is one correspondence between the set of real number, that is R, to the set of all linear transformation on R. Okay, so this means there is a one correspondence between R and the set of all linear transformation from R to R. So from this observation, we can regard this derivative f dash a not as a real number but as a linear operator or linear transformation. Okay, let me write what I have said. So from this observation, we can regard the derivative of f at the point A not as a real number but as a linear transformation or linear operator. Okay, and which linear operator? Linear operator T, which maps H to f dash AH. Okay,
So in this so from this discussion we can write, so we observe one, or we have proven a theorem. So let me write that theorem. Let f be a function on an open set of R, and this function takes values in R. Let this function be differentiable. At a point A. Okay. Then then there exists a linear map T from R to R such that limit of fa plus h minus fa minus th divided by h equal to 0 as h goes to 0. Correct? And vice versa. If we have such a linear map, then we say f is differentiable at the point P. Okay, so proof is very easy. We have already done enough work to prove this theorem. What we observe from this theorem, or what we can say, is the following result. यहाँ पर जो यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, अगर f डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनफैक्ट यूनिक होगा. ओके, द लीनियर मैप T from R to R in the above theorem is unique provided it exists. लेकिन इसे देखना बहुत आसान है. मान लीजिए कि आपके पास दो ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि T1 और T2 जो इक्वेशन स्टार को सेटिस्फाई करते हैं. ओके, सपोज देयर एग्जिस्ट टू लीनियर transformations T1 from R to R and T2 from R to R such that fa plus h minus fa minus T1h divided by h, this is equal to 0, limit h goes to 0, and this is first, and limit fa plus h minus fa minus T2h divided by h, this equal to 0, call it second. What you do, you subtract 1 to from 1 to 2, so you will get T2h minus T1h divided by h, limit h goes to 0, this is equal to 0. अब ध्यान दीजिए, क्योंकि T1 और T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थे. कहां से कहां? R से R में. ओके, तो मैं इसको Ti लिख रहा हूं. For I equal to 1, 2, Ti is a linear transformation. Okay, for Ti there exists constant alpha I which will be fixed. Okay, so T1 के लिए alpha 1, T2 के लिए alpha 2 fixed real number मिलेंगे, such that Ti h equal to alpha I dot h for all h in R. ये काम होगा, जरूर होगा. ठीक है, तो यहां से क्या मिला आपको? This means
from 3 you get alpha 2 dot h minus alpha 1 dot h divide by h, limit h goes to 0 equal to 0. तो ये लिमिट क्या है? दिस इज alpha 2 minus alpha 1 dot h limit h tending to 0 equal to 0. But this limit is alpha 2 minus alpha 1. This is 0. This implies alpha 2 equal to alpha 1. So this means alpha 2 dot h, which was t2h, this is same as alpha 1 dot h, this which is t1h, and this is true for all h. This means t2 equal to t1. Okay. thus we have proven that this linear map T, if exists, is unique. Okay. We will denote this T by df. We shall denote, let me denote this T by dfa. Okay. So इसका मतलब dfa फिर से एक क्या हुआ? dfa एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर से आर में. इसका मतलब dfa h जो होगा f dash a h होगा. ठीक है. This dfa is called derivative of f. This is called, and it is called the derivative of f at a. Okay. अब हम क्या काम करते हैं? इस डेफिनेशन को, अब ये जो हमने नई तरह से डिफाइन किया है, ठीक है, इस थ्योरम में अब आप ध्यान से देखिए, हम डिफरेंशियबिलिटी को एक दूसरी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर. अब अगर हम इस डेफिनेशन को, इसे डेफिनेशन माने और इसे हाई डायमेंशन में अप्लाई करें, तो क्या यह डेफिनेशन हाई डायमेंशन में ठीक बैठेगा? देखते हैं. ओके. अगर हम एज इट इज इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो क्या क्या दिक्कत आएंगी और क्या क्या सहूलियतें होंगी, से देखते हैं. तो हम अब नाउ take A be an open set in Rm m greater than equal to 1 ले लीजिए. ओके. and f from a to Rn be a function, and f from a to Rn be a function. So it's a vector valued function of several variable. ठीक है. अब हम वही जो डेफिनेशन, जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन जो हमने बोला था, लीनियर अप्रोक्सीमेशन. सो लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू द इंक्रीमेंट फंक्शन. इंक्रीमेंट क्या था? वही एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए. ठीक है. वह वाली डेफिनेशन को यहां पर यूज करते हैं. तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन डिफरेंस में देखना पड़ेगा. डिफरेंस क्वेश्चन पे, इस डिफरेंस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए. इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्या यह क्वेश्चन अब इस एक्सटेंडेड एक्सटेंशन वाले केस में सही बैठ रहा है? क्या ये मीनिंगफुल है, वेल डिफाइंड है या नहीं? ओके. सो क्या था यह क्वेश्चन? क्या था ये डिफरेंस क्वेश्चन? क्या था? एफ ए प्लस एच
ओके, यहाँ पर ए क्या है? ए इज ए पॉइंट इन आर. ओके, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए is a point in A which is subset of Rm minus एक linear transformation T from Rm to Rn divide by H. अब फिर से ध्यान दीजिए, यह H एक वेक्टर है Rm में. ओके, हम दो वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते. यह एक वेक्टर है Rn में. कहाँ वेक्टर है? दिस लाइज इन Rn. ये लाई करता है इधर Rn में. ठीक है, सॉरी Rn में. Rn मीन्स यहां पर Rn में. ये Rn का वेक्टर है और यह जो वेक्टर है यह Rm का वेक्टर है. ठीक है, और ये बात हमने शुरुआत में बोली थी कि हम डिवीजन नहीं करते हैं वेक्टर्स का डिवीजन हमें नहीं पता. तो यहाँ पर क्या किया जाए? हम वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन दो वेक्टर्स को आपस में, और वह भी वेक्टर एक Rm में है और दूसरा वेक्टर Rn में है, इनका डिवीजन के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है. इसका एक रास्ता हम निकालते हैं. हम H के नॉर्म से डिवाइड करें तो ये काम किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्म ऑफ H इज नाउ स्केलर क्वांटिटी. यह एक रियल नंबर होगा. ठीक है, इनफैक्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा. अगर हम इस डिफरेंस क्वेश्चन को देखें तो यह वेल डिफाइंड है. ठीक है, और T जो है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आप जानते हैं Rm to Rn वी ऑलवेज हैव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. और आप यह भी जानते हैं किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, इफ T is a linear transformation, then we can express T by a n cross m matrix. What does this mean? This means T of H equal to तो इस मैट्रिक्स का नाम हम दे देते हैं, से सपोज मैट्रिक्स इज कॉल्ड, सपोज दिस मैट्रिक्स इज D. Okay, so this is D into vector this vector H. Okay, ये कॉलम वेक्टर D जो है, this D is n cross m n cross m मैट्रिक्स, और यह H जो है यह है m cross 1 कॉलम मैट्रिक्स. ओके, सो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड. करेक्ट. तो और जो भी यह वेक्टर बनेगा वह n क्रॉस 1 का वेक्टर होगा. ओके, दिस वेक्टर इज ऑफ n क्रॉस 1. सो यह n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर है और n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर Rn का पॉइंट होगा. ठीक है, तो सारी चीजें अकॉर्डिंगली ठीक बैठ रही हैं. इस केस में this is a vector in Rn, this is also a vector in Rn, and we have just seen that this is a vector in Rn. So we can add and subtract vectors in Rn, and this this thing in numerator is denominator, this is a real number or scalar. We can multiply a vector by a scalar. Okay, so सब कुछ हमारे पास अब वेल डिफाइंड है. अब इसे हम एक्सटेंड करते हैं. जो भी हमने डिस्कशन, जो भी अभी एक थ्योरम देखी थी, इस थ्योरम को एज ए डेफिनेशन हम एक्सटेंड करेंगे. इस थ्योरम को एज ए डेफिनेशन हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं.
ठीक है, ओके। सो लेट मी गिव यू द डेफिनेशन। नन इन अगले क्लास में हम लोग इस डेफिनेशन की मदद से देखेंगे कि यह जो भी डेफिनेशन हम देंगे, यह डेफिनेशन कैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के साथ रिलेट करती है, कैसे उसके साथ बिहेव करती है। ठीक है, क्या यह जो नोशन है डिफरेंशिएबिलिटी का, क्या यह हमें कंटिन्यूटी ऑटोमेटिकली देगा या नहीं देगा। अगर देता है तो हम इसे अप्रोप्रिएट एक्सटेंशन मानेंगे, अदरवाइज हम कुछ और काम करेंगे। ठीक है, सो लेट मी गिव you the precise definition. Okay. Let A be an open set in Rm and f be a function from A to Rn. Okay. Suppose A is a point of A. We say that f is differentiable at A if there exists a linear map or linear transformation T from Rm to Rn such that limit h goes to 0, this vector go to 0. Let me not use this, just say fa plus h minus fa minus th divided by norm h equal to 0. Okay. If this happens, we say uh, f is differentiable. F is differentiable at point A. The linear transformation is called, the linear transformation T is called derivative of f at A. Derivative of f at A. We and you know, since this is a linear transformation, for this linear transformation with respect to standard basis of Rm and Rn, there exists a matrix of order n cross m. Okay. The matrix associated with T with respect to the standard basis of Rm and Rn, the matrix associated with T is denoted by DFA. Correct? So as in the case of one variable, we have this result. अगर यह ऐसा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है तो वह यूनिक होगा। So result, the linear transformation T in the above definition is unique. काम वही करना है जो ऊपर काम किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमें चलना है प्रूफ के लिए, बिल्कुल वही काम यहां पर होगा। ठीक है, आपके पास
मान लीजिए कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो क्या काम कर रहे हैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए माइनस टी वन एच डिवाइड बाई नॉम एच लिमिट एच गोज टू जीरो इक्वल टू जीरो, एक ये दे रहा है। सेकेंडली लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए माइनस टी टू एच डिवाइड बाई नॉम एच इक्वल टू जीरो, ये दे रहे हैं। ठीक है, नाउ यू सब्ट्रैक्ट एंड यू व्हाट यू गेट इज लिमिट h goes to 0 t2h minus t1h divide by norm h equal to 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए t2, now you see what is t2h minus t1h, consider this is t2 minus t1h, okay t2 minus t1h, and this t2 minus t1, this is again a linear transformation, let me call that t3, t3h, okay, what you do take अब क्या काम करते हैं हम, now this h is coming from rm, और मैं rm की जो बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2, सो E1 जो है स्टैंडर्ड बेसिस आप जानते हैं 1 0 0 0 m टपल, E2 जो है 0 1 0 0 0, सिमिलरली EM जो है वह 0 0 0 1 होता है, ये इसे हम स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। इस h को इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। सो दिस मीन्स T3H is T3H1E1 plus HMEM, ओके, ये ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको बताइए, since this is a linear transformation, this is equal to H1 T3E1 plus H3 H2 H3 and so on HM TEM, ओके। ठीक है, तो ये हमें मिला। करेक्ट, नाउ let me take this thing, now consider norm T3H, norm T3H क्या मिलेगा आपके पास बताइए, norm of H1 T3E1 HM T3EM, ये नॉर्म कहां पर ले रहे हैं हम, Rn में ले रहे हैं, ये नॉर्म है Rn में, ओके। तो क्योंकि नॉर्म जो है वह आप जानते हैं क्या सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो दिस इज समीशन j इक्वल टू 1 to n mod hj, mod hj norm tej, ओके। अब इसको मैं लिख सकता हूं समीशन j इक्वल टू 1 to n mod hj into c, what is c, where c is let me take less than equal to, where c is maximum of norm te1 to norm t3 या t3 है, t3em, ओके। सो ये हम लिख दिए, गुड। So what we get from here,
this is equal to, this thing is equal to C into no mod H1 to mod Hn। अब एक रिलेशन, ये आप बहुत, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। क्या एक्सरसाइज है? सो दैट mod H1 plus mod Hm, this is less than equal to root m square root H1 square to Hm square, जिसे हम क्या कहेंगे? रूट m नॉर्म h। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, सो दिस इज इजी, वी कैन यूज कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ओके, so what we have proven so far, T3H is less than equal to C square root m norm h, let me call this capital M norm h। Okay, this is capital M norm h। So when h goes to 0, what we get? T3H goes to 0, correct? Therefore we have this। So ध्यान दीजिए, यहां पर हम वापस चले। So तो इसका मतलब क्या है? T3H 0 हो गया। T3H क्या है? T2 माइनस T1H। T3H क्या है? T2 माइनस T1H goes to 0। ओके, सो T2H इक्वल टू T1H, ये आपको मिलेगा। ठीक है, सो डू दिस। ओके, ठीक है। इसे और अगर आपको इसमें थोड़ा सा समझ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस स्टेप के बाद आप यूज करिए कि हम T2 और T1 को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे? मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, हम T2 और T1 को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो मान लेते हैं T2 की मैट्रिक्स B2 है और T1 की मैट्रिक्स B1 है। सपोज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन of Ti is Bi, I equal to 1,2। तो आपके पास क्या मिला? आप जानते हैं TIH इक्वल टू BI.H। ठीक है, सो आपको मिला था लिमिट h गोज टू 0 T2 माइनस T1 T2H माइनस T1H डिवाइड बाय norm h equal to 0। So what you get from here? Limit h goes to 0 B2.H माइनस B1.H डिवाइड बाय norm h equal to 0। अब आप ये प्रूफ करिए कि B2 और B1 के जो इंट्रीज हैं वह सेम है या इनके कॉलम सेम है। ओके, अब ये कैसे दिखाएंगे? इसे देखने का एक तरीका है, नाउ टेक h इक्वल टू TEJ, करेक्ट? टेक h इक्वल टू TEJ। तो EJ आप जानते हो क्या है? EJ है 0 at jth place it is T 0। ठीक है,
So what you get? Limit t goes to 0, b2 minus b1, b2 minus b1 ej divide by ओके इसको मैं क्या लिखूं? टी इजे लिखूं, इसे मुझे टी इजे लिखना था, टी इजे divide by norm t ej equal to 0. So this means b2 minus b1 t आप जानते हैं ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या मिलेगा? b2 t ej divide by norm ej is 1, limit t goes to 0. So this means b2 ej minus b1 ej is 0. So this means b2 ej is same as b1 ej. So this is jth column of b2. This is jth column of b1, and this is true for all j equal to 1 to so for all j equal to 1 to m. ओके, तो क्या मिला आपको? आपको मिला कि सारे कॉलम्स सेम है, तो ये मतलब this means b2 is same as b1, this means t2 is same as t1. Okay, so I'll stop here. So let me remind you what we have proven. We have proven that if the derivative of f at point A exists, it is unique. This is what we have shown. Okay, I'll end this meeting.